Hello everyone. Hi guys, how are you? Good evening, बच्चों. Very very good evening to all of you. Am I audible to all of you guys? आवाज आ रही है? All good. Hi Dhruv, hi Shilpa. Good evening, guys. आवाज आ रही है? Am I audible to you? Okay, बच्चों. We are going to start. Good evening, guys. Good evening. Good evening. So guys, 500 must do quant question, guys. ये सीरीज के अंदर 500 क्वांट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कवर होंगे जिसमें 100 प्लस कॉन्सेप्ट्स कवर होगा. सो यू कैन से दैट वी विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट क्वांट सिलेबस. Selection of question is very important in this whole series. I'm going to discuss only advanced level questions in it, right? So you should know some basics, right, before you can target these questions. The questions ka level of difficulty is slightly higher, okay? But every question, right, every question will give you so much learning. If you do this series, हर question में आपको बहुत अच्छी learnings मिलेंगी, right? और आपका complete quant syllabus ये 500 must do quant questions की series through cover हो सकता है. So आज के topic में, in today's topic I will be covering LCM and HCF guys, right? Question number 25. Why? Because ये series हमने पहले start किया था, right? 24 तक हमने questions किए थे. नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है बच्चों ये. दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ नंबर सिस्टम. वी आर गोइंग टू डिस्कस एलसीएम एचसीएफ टॉपिक. आज हम 7 क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम एचसीएफ के. कम ऑन गाइस, रीड दिस क्वेश्चन गाइस एंड गिव इट अ ट्राई. ट्राई करो, आंसर करो बच्चों. बताओ क्या आंसर आएगा. एंड टुमारो ऑनवर्ड्स गाइस, राइट, कल से मैं क्या करूंगा कि ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल है, right, the PDF file that I'm making of these questions will be uploaded 1 hour before the session in our WhatsApp group, right? जो WhatsApp group है जिसका और Telegram group जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये PDF फाइल वहीं पे अपलोड कर दूंगा so that you guys can first attempt it and we can straight away have a discussion of those questions here, right? Look at this question guys, right, based on the concept of LCM HCF and give me the answer. बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. Write down your answer guys. N bells toll at different interval which are the multiple of 2 minutes. If all the bells toll together for the first time at 10 a.m. and the 9th time at 2 a.m. on the next day, what is the maximum possible value of n? So guys, we have total n bells, right? N bells, right? We have total n bells. They are, right, and these bells toll at different intervals, right? So the time at all of these bells toll at are different. इनका सबका time different है, but they has to be even, right? It has to be multiple of 2 minutes. ये सारा जो timing है, it has to be multiple of 2 a.m. 2 minutes. 10 a.m. पे at 10 a.m. they are tolling together for the first time. 10 a.m. they're tolling together for the first time. We are supposed to find out, right? We are supposed to find out, right, and for the ninth time all these bells toll together at 2 a.m. what is the maximum value of n? So number of bells को maximize करना है बच्चों आपको. Think, give it a try. Come on guys, give it a try. Comment your answers. Amazing, beautiful question. अब this is the kind of question बच्चों जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर है, जिसको एलसीएम निकालने के साथ साथ उसकी एप्लीकेशंस का भी आइडिया है. स्टूडेंट्स हु आर अवेयर ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम rather than just cramming how to find out the LCMs, right? Those are the students who will manage this type of question guys. वही बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. As I told you guys, ये सीरीज में हम बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओके, very selective questions will be covered in this whole series. Any idea? Let me solve it for you guys, right? मैं करवाता हूँ आपको कैसे करना है. Guys, 10 a.m. to 2 a.m. Tell me, what is the total time? What is the total time? Guys, can you please tell me what is the total time?
10 a.m. to 2 a.m. on the next day. 2 a.m. time is on the next day. Can you see this, guys? Total time will be equal to 16 hours. ये 16 hours का time है बच्चों. In terms of minute, it will be 16 into 60. That means 960 minutes. Quite easy. Now, guys, right, for the first time, in the 960 minutes, they are tolling together for the 9 times. So, guys, here they are tolling together for the first time, right? And here they are tolling together for the 9th time. So, guys, second time, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and finally the 9th time. Tell me, guys, what is this interval? Can you please find out the value of this interval? Can you please tell me the gap between the time when they are tolling, right, for consecutive number of times? Can you please tell me? Can you please tell me the gap between these two? What is the gap? What's the gap between these two intervals, guys? Between these two times, right? First time जब वो toll कर रहे हैं, second time पे when they are belling together, right? What is the time? Yes, their total 9th time they're tolling together at 960th minute. So out of total 960 minute, guys, there is a total how many interval? There total how many interval, guys? There are total 8 intervals. Yes, everybody. So can I say that? Can I say that the time between two the time gap between these two is of 120 minutes? Am I right or wrong? Is it clear, everybody? Right, everyone? So can I say that this time gap is equal to 120 minutes? So can I say after every 120 minute all these bells toll together? Yes or no? Can I say after every 120 minute all these bells toll together? Are you guys with me? Is this point clear? Can I erase this data? Right? ये point सबको समझ में आ गया? Now, so guys, can I say this? Right? All these, the individual time of these n bells, LCM must be 120. Because do you remember this type of question? If I say there's a red light that blinks after every 2 minutes, there is a green light that blinks after every 3 minutes. Both of these two will blink together at an interval of 6 minutes, and 6 minutes is LCM of 2 and 3. Can I say these n bells? Can I say this, guys? These n bells, right, must be having the LCM of all the times of these individual time of these n bells will be equal to 120. n bells का individual times का जो LCM आएगा बच्चों, that is 120. तभी तो after 120 they will toll together. Am I right or wrong? Do you agree with this part? Yes or no? ये वाला point basics में आता है. So guys, I just need to find out. Now I want to maximize the value of n, right? What I want to do now is to maximize the value of n. n को maximize करना है बच्चों. If I want to maximize the n, now tell me guys, n को maximize करना है तो ये सारे numbers का LCM 120 आना चाहिए. So can I say all these values which I am putting in the denominator, they are the factors of 120? Can I say that? अगर 120 LCM है तो ये सारे numbers इसका factor बनेंगे कि नहीं बनेंगे? Right? यही तो LCM का definition होता है. Yes or no? Right? The values that I'm writing in the denominator has to be the factors of the values in the numerator. तभी तो 120 इसका LCM बनेगा. And because I want to find out, because I want to maximize the number of bells, n को maximize करना है, तो I will maximize the number of factors of 120. 120 के factor denominator में आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, but अगर number of bells को maximize करना है, तो I will write down all the factors of 120. Am I right or wrong? I will write down all the factors of 120. But then there is a point here that all these time intervals are multiple of 2 minutes. अगर ये सारे के सारे time intervals 2 minutes के multiple हैं, तो can I say all these factors must be the even factors of 120? Yes or no? All these factors must be the even factors of 120. So basically बच्चों question का answer is nothing but finding out the even factors of 120.
राइट इतना ही क्वेश्चन था. इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 120 तो आप कर लेते ना. प्रीवियस सेशन में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स किए थे, राइट. सो 120 बच्चों, 120 का फैक्टराइजेशन इज 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं बच्चों, द इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो बच्चों 2 का पावर क्या हो सकता है? 2 का पावर हैज टू बी टेकन एज फ्रॉम 1 to 3. अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर्स में बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं. अब फॉर्मूला रट लेंगे तो फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे. फॉर्मूलाज नहीं रटना है, फॉर्मूला का डेरिवेशन समझना है कि वो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्यों बना, राइट. बिकॉज अगर ये चीज पता होगी तो देन आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे. वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मुझे 2 का पावर 1 से 3 लेना है, 0 नहीं ले सकते. व्हाई? बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स. 3 का पावर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 1. 5 का पावर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 1. So 3 factors here, 2 factors here, 2 factors here. So there can be total 12 even factors. तो यहाँ पे आप 12 even numbers ले सकते हो जिनका LCM 120 and that's a maximum number of values that you can take. So n is 12. Okay? बताओ बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था. पूरा LCM आ गया कि नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर, राइट. LCM निकालने के शॉर्टकट में बच्चे टाइम निकाल देते हैं, राइट, बट LCM की एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस नहीं करते, राइट. दैट्स अ प्रॉब्लम गाइस, राइट, विद द कंटेंट दैट यू पीपल आर स्टडीइंग नाउअडेज, राइट. ठीक है, शॉर्टकट्स पे जा रहे हो बच्चे, राइट. शॉर्टकट कि शॉर्टकट बता दो, इतने सारे केसेस ना बने, ऐसे क्वेश्चंस बता दो. 26. द LCM ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स x, y and z is 243. Find the total number of ordered triplet, guys. Ordered triplet. This is a kind of question which is a combination of the concept of LCM as well as permutation and combination. Right? चलो ट्राई करो. ये एक बार ट्राई करो बच्चों आप लोग. अमेजिंग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही क्लास क्वेश्चन है. इसमें LCM कोई निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं काम करेगा. इसमें LCM की एप्लीकेशन काम करेगी. LCM निकालने का मेथड जो है, राइट, वो मेथड क्या है, उस मेथड के अंदर LCM की क्या डेफिनेशन यूज होती है, राइट, वो अप्लाई करके आपको इस क्वेश्चन को करना है बच्चों. करो. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द राइट आंसर. अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वेश्चन. टेक अ मिनट गाइस, गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो अगर क्लिक कर रहा है, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन. ओके, दैट्स द रॉन्ग आंसर. देखो, चलो अब ये बताओ बच्चों, LCM कैसे निकालते हैं बच्चों? हाउ डू यू फाइंड द LCM? LCM means a least number which is a common multiple of the given numbers, but it has to be least. For example, if I give you the number 2 power 3 multiplied by 3 power 1 and 2 power 4 multiplied by 3 power 2, LCM definition says 3 power 1, let's say. LCM definition says find out a common multiple of both of these two numbers, but it has to be the least common multiple. That means I'm looking for a number which is divisible by both of these two numbers. मतलब ये दोनों numbers उस number का factor बनने चाहिए, and that number has to be least such number जो इन दोनों से divide आएगा. So basically I'm looking for a number which is divisible by both of these two and it has to be least. So बच्चों, what is the minimum power of 2 you will take? आप 2 का minimum power क्या लोगे? What is the minimum power you will take? What is the minimum power you will take, guys? 3 or 4 में, right? What is the minimum power you want to take, guys? LCM निकालना है, मल्टीपल निकालना है. शुभ, तो 3 लोगा तो 2 की पावर 4 से कैसे डिवाइड होगा? देखो बच्चे, लीस्ट LCM में लीस्ट वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि इन दोनों में से जो लीस्ट पावर है वो लिखोगे, बट आगे कॉमन मल्टीपल भी एक वर्ड लगा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है बच्चे का. हाँ,
I want a number which is divisible by both of these two numbers. तो इन दोनों पावर्स में से वो पावर लेनी है जो दोनों से डिविजिबल हो, तो लीस्ट पावर नहीं लेनी है, इन दोनों की बड़े वाली पावर न्यूमरेटर में आएगी. ओके, इट इज 4, so it has to be 2 power 4. Okay, multiplied by 3 का कौन सा पावर आएगा, दोनों से डिविजिबल है तो 3 का पावर 1 आएगा. Got it guys? Is it clear? So you need to take a number which is divisible by both of these two number in the numerator, और इन दोनों पावर्स में जो बड़ा पावर आएगा बच्चों वो न्यूमरेटर में आएगा, तभी जाके एलसीएम निकलेगा, तभी जाके दोनों से डिविजिबल होगा. राइट एवरीबॉडी? Now guys, question says that's it. Now इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन के आंसर में यूज करेंगे. We'll be using the same concept to answer the question. I have 3 number x, y and z. LCM of all these 3 numbers, LCM of all these 3 numbers is 243, which is 3 power 5. Everybody clear with this? Yes or no? 3 power 5 ही होगा ना? 3 power 481? Yes, 3 power 5. So guys, can I say that if the LCM 3 power 5 is LCM of all these 3 numbers x, y and z, and we are supposed to find out the order triplet of x, y, z. But tell me guys, can I say this guys? Any one of x, y, z must be having 3 power 5. अच्छा ये बताओ, what will be the LCM of 3 power 2, 3 power 3 and 3 power 4? 3 power 2, 3 power 3, 3 power 4 का LCM क्या आएगा बच्चों, जल्दी से लिखो. What is going to be the LCM of these number guys? इनका number का LCM would be 3 power 4 बच्चों, right? 3 power 5 नहीं आएगा ना जब तक. So can I say the highest power in the numerator, right? Highest power of 3 in the denominator has to be 5, तभी जाके LCM 3 power 5 बनेगा. इसका LCM तो 3 power 4 बनेगा. इन तीनों में से कोई एक नंबर ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें 3 का पावर 5 होगा, तभी जाके LCM 3 का पावर 5 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. Yes or no? So in this case LCM would be 243, but in this case LCM would not be 2 power 243. Yes or no? Yes or no? Do you agree? So if I want the LCM to be equal to 243, any one of these 3 numbers must be a multiple of 3 power 5. Do you agree with this point guys? Everybody clear with this? X, Y and Z का LCM मेरे को find out, right? Which is 3 power 5. Now guys, tell me, if I ask you, right, कि x का value, so can I say that LCM is 3 power 5, तो कोई और prime number तो नहीं हो सकता है. So can I say x is a number which can take any value from 0 to 5 बच्चों. x की value 0 से 5 कुछ भी हो सकती है. Can I say this? y में 3 का value, x की value में 3 की power 0 से 5 कुछ भी हो सकती है. y की value में भी 0 से 5 कुछ भी हो सकता है. z की value भी 3 की power 0 से 5 कुछ भी हो सकता है. Am I right or wrong? Do you agree with this or not? Guys, if I say the value of x can be anything with 3 raised to power 0 to 5, y भी 3 का power 0 से 5 कुछ हो सकता है, z भी 3 का power 0 से 5 कुछ भी हो सकता है. How many ordered pair you will be able to make? Total कितने pairs बनेंगे बच्चों? 6 into 6 into 6 will be total 216 pairs. Total 216 pairs. 6 shirts, 6 trousers and 6 pants. 6 ties. 6 shirts, 6 trousers, 6 ties. Total number of combinations of wearing the suit will be 216. Do you agree with this? So guys, in 216 pairs में क्या सभी pairing का LCM would be 3 power 5? No, because till now we have not made sure कि at least तीनों में से कोई एक नंबर 3 की पावर 5 होना चाहिए बच्चों. Yes or no? अगर इन तीनों में से कोई एक नंबर में 3 की पावर 5 होगी, बाकी दोनों में 3 की पावर कुछ भी हो, तो LCM 3 का पावर 5 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? Yes or no? If I take any one of these number as a multiple of 3 power 5, 3 की पावर 5 हो उसके अंदर और बाकी दोनों में कुछ भी हो, तो LCM 3 का पावर 5 आएगा. In this case, we have taken only those cases where the power of 3 can be anything from 0 to 5. Power of 3 0 से 5 कुछ भी ले सकते हो आप. तो ऐसे 216 pairs बनेंगे. Tell me guys, if I ask you how many cases out of 216 are there जिसमें कोई भी power 3 की power 5 नहीं है. So guys, अगर कोई भी power 3 की power 5 नहीं है, that means 3 की power x में भी 0 से 4 के बीच में है, y की power भी 3, y में भी 3 का power 0 से 4 है, and z में भी 3 का power is from 0 to 4. So the 5
5 into 5. There are total 125 such triplet. There are total 125 such triplet where none of the power is 3 power 5. None of the value is having 3 power 5. So if I subtract these cases from the total number of cases, the number of cases I'll be left with 91. Can I say in all these 91 cases, any one of x, y, z would be having 3 power 5 and the rest of 2 will be the multiple of, will be having 3 powers from 0 to 5, right? But any one of them will definitely be having 3 power 5 in all these 91 cases. So in 91 cases में x, y, z में एक नंबर जरूर ऐसा होगा जिसमें 3 का पावर 5 होगा. तो उनका LCM क्या बनेगा? 3 का पावर 5. आंसर इज 3. गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? क्लियर नाउ? वेरी. बहुत क्लास क्वेश्चन है ये, राइट? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, राइट? बट बच्चों को ऐसे क्वेश्चन पसंद नहीं आते जहां पे माइंड लगाना पड़े, लॉजिक लगाना पड़े, राइट? Guys, doing these questions na, will give you a better understanding of the concept. Secondly, you will be able to test yourself. Where do you stand when it comes to the understanding of the basic of that particular topic, right? नहीं तो content जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है, irrelevant content that you people are studying, which you actually do not know is relevant for your CAT exam or not. देखो ये questions में advance भले आप इनको बोलो, बट कॉन्सेप्ट जो है, राइट, बेसिक जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड जो है वो तो बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड है ना बच्चों, राइट और रॉन्ग? आर वी डूइंग एनीथिंग जिसमें बहुत कुछ ज्यादा डिफिकल्टी और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो जो हमने पढ़ा नहीं है? एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन बेसिक लॉजिक. यस और नो? सो वी आर जस्ट यूजिंग दोज बेसिक्स एट अ डिफरेंट लेवल. दैट्स इट, और कुछ नहीं है. Similar question for your practice. I hope you guys will be able to give me the answer. And this question, give it guys, come on, take a minute and give me the answer. Now guys, it should take you a minute to answer these questions now. LCM of three positive integer x, y, z is 91 square. Find the total number of ordered triplet. अब देखो बच्चों वही कहानी है इसमें भी. What I want is x, y और z, इसका जो LCM बनना चाहिए बच्चों 91 का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर बनना चाहिए. Am I right or wrong? Is this point clear? So guys, can I say that any one of x, y, z would be having 13 power as 2? एक्स वाई जेड में से कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें 13 का पावर 2 होना चाहिए, एंड कोई एक नंबर ऐसा भी होना चाहिए जिसमें 7 का पावर 2 होना चाहिए. डू यू एग्री? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एनी वन ऑफ एक्स वाई जेड मस्ट बी हैविंग 13 पावर 2. फॉर एग्जांपल अगर मैंने x में 13 का पावर 2 डाला, y में 7 का पावर 1 डाला, z में 7 का पावर 2 डाला, बच्चा व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर? What is going to be the LCM of these three numbers guys? इन तीनों नंबर का LCM क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? 13 का पावर 2 into 7 का पावर 2. Right or wrong? I want a number which is divisible by all these three numbers. So I want 13 power 2 into 7 power 2 in the numerator, right? Okay. If I say कि इसमें 13 का पावर 1 है, इसमें 13 का पावर 2 है, इसमें 7 का पावर 1 है, क्या इसमें LCM 91 का स्क्वायर बनेगा? Will you be able to make? नहीं, इसमें LCM जो बनेगा 13 का पावर 2 into 7 का पावर 1. तो गलत हो गया. This triplet will not work, but this triplet will work. Yes or no? है ना? Okay. Right. So 13 का पावर 2, 7 का पावर 2, 1 and 1. What is the LCM of these three numbers guys? इसका LCM क्या बनेगा? क्या इसका LCM 91 का स्क्वायर बनेगा? Yes. इसका बनेगा. Right? So I want
any one of these three to have a 13 power 2 and any one of these three also to have 7 power 2. तीनों में से एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके पास 13 की पावर 2 और एक ही नंबर ऐसा भी होना चाहिए जिसमें 7 की पावर 2. दोनों एक के पास हो सकते हैं, हो सकते हैं. दोनों दो के डिफरेंट के पास भी हो सकते हैं, हो सकता है, राइट. क्या दो के पास भी 13 की पावर 2 हो सकता है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 13 पावर 2 7 पावर 2 13 पावर 2 7 पावर 1 एंड 13 पावर 1 7 पावर 1, इसका एलसीएम क्या बनेगा इंटू 7 पावर 2, यही बनेगा 13 पावर 2 7 पावर 2, राइट. तो यहाँ पे दो के पास 7 की पावर 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा. एलसीएम फाइंड आउट करना है ना, तो डिनोमिनेटर में 7 की जो हाईएस्ट पावर है वो न्यूमरेटर में आएगी तो वो एलसीएम में आएगी. यस और नो, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, राइट. इतना पॉइंट समझ में आना चाहिए. गॉट इट. सो गाइस सेम ही कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस यहाँ पे दो पावर्स की बात हो रही है, राइट और रॉन्ग. सो आई हैव एक्स वाई जेड इन द डिनोमिनेटर जिसका एलसीएम 91 की पावर 2, दैट मींस 13 into 2 into 7 की पावर 2 बनना चाहिए. If I want the LCM to be this number guys, right, 91 का स्क्वायर अगर मुझे LCM बनाना है बच्चों, तो let's talk about कि let's distribute the power of 13. So 13 की अगर मैं बात करूं, power of 13 can be anything from 0 to 2 here. Y में भी 13 का पावर 0 से 2 कुछ भी डालो, Z में भी 13 का पावर 0 से 2 कुछ भी डाल सकते. So they are total 3 into 3 into 3, total 27 ways of distributing the power of 13. If I ask you to distribute the power of 13 in X, Y, Z, how many different ways are there? There are total 27 ways. Will all these 27 work in our case? If I want to make sure that LCM has to be 13 का power 2 into 7 का power 2, क्या ये 27 ways applicable है? नहीं. इसमें वो सारे cases जिसमें 13 का पावर 0 से 1 है, Y में भी 13 का पावर 0 से 1 है और Z में भी 13 का पावर 0 से 1 है. ऑल दीज केसेस नीड टू बी एलिमिनेटेड. ऐसे टोटल 8 केसेस बनेंगे. आउट ऑफ दीज 27 केसेस देयर आर 8 सच केसेस where the power of 13 is less than 2 in all three values. So subtract those 8 cases, I will left with 19 cases. बच्चों ऐसे 19 केसेस बने जिसमें at least one of x, y, z will be 13 power 2. Yes or no? Same is the story with 7 power 2 also guys. Can I say this? Because if I want कि तीनों में से x, y, z में से any one of them has to be having 7 power 2 also. So the ways of distributing 7 powers to x, y, z can be 3 into 3 into 3. That is 27. But those cases where the power of 7 is not 2 are how many? वो सारे cases जिसमें power of 7 is not crossing 3, is not crossing 2 are 8. So 27 minus 8, there are total 19 such cases where at least one of x, y, z will be having 7 power 2, right? So guys, there are total 19 ways to distribute the power of 13 between x, y, and z so that at least one of them will be having 13 power 2. And there are total 19 ways to distribute 7 powers from 0 to 2 in x, y, z so that at least one of them is having 7 power 2. So there will be total 361 possible combination. Yes, 19 shirts, 19 trousers, total combination of wearing the suit would be 361. So there are 361 possible triplets guys, right? Option 2 is going to be the correct answer. Right, everybody? Done, bacho? Any doubt in this? Is it clear to all of you? That's the right answer, guys. Option 2, guys. ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे. Will you be able to do these types? Come on, guys. Go for the next one. LCM of two number. LCM of two number is 360. How many such ordered pair are possible? Okay. That's a different question guys, right? बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा. कॉन्सेप्ट यही है बट थोड़ा डिफरेंट है. इसमें क्या है कि दो नंबर का एलसीएम 360 आना चाहिए. ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? ओके, वैसे ही हो जाएगा, राइट? बट 360 में देयर आर 3 डिफरेंट पावर्स ऑफ प्राइम. 3 पावर्स बनेंगी बच्चों प्राइम. बताइए. LCM of two numbers 360. How many such ordered pair are possible?
Animesh, because we are supposed to find out the order triplets, right? हमें 17 और 7 दोनों powers को assign करना था, right Animesh? Right? Tell me if you, Animesh, you have 17 different color shirts. आपके पास 17 different color की shirts हैं, sorry 19 different color की shirts हैं और 19 ही different color के trousers हैं. How many combination you will be able to make? How many combinations you will be able to make of wearing the suit? लोगों को तुम्हारी पढ़ाई की चिंता नहीं है, लव तुम्हें टाइम पे मिल रहा है उसकी चिंता है. फ्री में आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम बच्चों के कैट में सिलेक्शन हो जाए, राइट? नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, तुम पहले जिंदगी में अपना प्यार ढूंढ लो, कैट का पेपर तो बाद में क्लियर हो जाएगा, राइट? लेट्स हैव सम लव फर्स्ट एंड देन विल प्रिपेयर फॉर कैट. नहीं, यहाँ लोगों को खाना खाने को नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को, और ये फ्री में प्यार बांट रहे हैं. ले लो भाई जिसको चाहिए, फ्री में मिल रहा है. 84% already found love with us. Go find love with them. LCM HCF बाद में कर लेंगे. इनके पास यूजर्स अच्छे होंगे नहीं, राइट? If they also start coming to my sessions, right? जहाँ इनके लाइव सेशन चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ वहां जाके प्रमोशन कर. LCM of two number is 360, guys. How many? LCM of two number is 360. How many such ordered pair are possible, guys? Right? दो numbers दिए हैं बच्चों, right? दो numbers दिए हैं बच्चों, A and B. LCM of two number is 360, guys. 360 का factorization करोगे बच्चों तो 2 का power 3 बनेगा, 3 का power 2 बनेगा, 5 का power 1 बनेगा बच्चों, right? 8 into 9 into 5. All good? Are you guys with me? Now guys, what we want is, we want the ordered pair जिनका LCM 360 बनना चाहिए. ठीक है बच्चों? LCM has to be 360. Okay. So guys, see this. All I have to make sure कि A और B में से किसी एक नंबर में 2 का पावर मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 का पावर मिनिमम 2 होना चाहिए और 5 का पावर मिनिमम 1 होना चाहिए. So guys, 2 का पावर can be anything from 0 to 3, everybody, and because it's ordered pair, tell me guys, 2 का पावर 0 से 3 हो सकता है, B का पावर भी 0 से 3 हो सकता है. How many ways are there to distribute 2's power, right, up to 3 between A and B? 4 into 4, 16. But out of these 16 cases, how many cases are there जिसमें 2 का पावर 3 नहीं हो, कि दोनों में 2 का पावर कम है? 0 से 2, यहाँ पे भी 0 से 2, 3 into 3, that means 9 ऐसे केसेस हैं. To make sure that कि मिनिमम A और B में से ऐसा एक नंबर हो कि एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए जिसमें 2 का पावर 3 डेफिनेटली हो. So can I say there will be 7 such cases, guys? Can I say this? The 7 ways to distribute 2's power between A and B so that at least one of them is going to have 2 power 3, right? Similarly, guys, 3 के केस में बच्चों, right? A और B में बच्चों 3 की केस की अगर बात करें तो 3 का केस can be 0 to 2 here, इसमें भी 0 से 2, right? 3 ways here, 3 ways here, 9 ways. Out of these 9 ways, where all the powers of 3 are less than 2, 0 to 1, 0 to 1, guys. कितने? 2 into 2, 4. तो 4 minus कर दिया. There will be 5 such ways to distribute the power of 3 so that at least one of them is having 2. Similarly, guys, A और B में 5 की power अगर distribute करना है, right? 5 का पावर 0 से 1 हो सकता है, इसमें भी 5 का पावर 0 से 1 डाल सकते हो.
2 ways here, 2 ways here, total 4 ways. Out of these 4 ways, how many ways are there where none of this is having a 5 power as 1? There's only one way, subtract that. So total banenge 3 such cases of distributing 5's power so that at least one of them is having 1 power of 5. So 3 ways. So total combination 7 shirts, 5 trousers, 3 ties, total 105. Everybody clear with this? Guys, ऐसे questions आएंगे तो कर लोगे ना? Will you be able to do these type of questions now? If you're getting across these questions, right? Very good. 105 आंसर आ गया. ठीक है बच्चों, एक बार यही टाइप के क्वेश्चंस रखते हैं आज, राइट? एक्चुअली क्या हुआ सेशन में, आई जस्ट वांट कि सेशन थोड़े शॉर्ट रहे, राइट? 30 मिनट्स के, नहीं तो वॉच टाइम नहीं रहता है सेशंस का यूट्यूब के ऊपर. वैसे तो आई वाज सपोज्ड टू डिस्कस 7 क्वेश्चंस टुडे. 28 तक करते हैं. कितने क्वेश्चंस कर लिए? 5. 1 2 3 4 क्वेश्चंस किए, राइट? ठीक है बच्चों, कल से ना आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ फाइल इन एडवांस, राइट? कल से मैं पीडीएफ फाइल आपको एडवांस दे दूंगा सो दैट एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चंस हमारे जल्दी 20-25 मिनट्स में कवर हो जाए. आई स्ट्रेट वी कम एंड डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, पीडीएफ फाइल विल बी गिवन टू यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड द टेलीग्राम ग्रुप. दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया बच्चों, राइट? ठीक है, तो आप पहले से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना और सो दैट आप लाइव सेशन में जल्दी से अपने डाउट्स कवर करके खत्म कर दो उसको, राइट? और क्वेश्चंस नहीं है तो मोस्टली हो सकता है काफी कुछ क्वेश्चंस हो भी जाएंगे आपसे, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी होंगे, तो लाइव में आप आराम से आके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, राइट? सो गाइस, नंबर सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है. एक सेशन और लेंगे हम मिस नंबर सिस्टम का, LCM HCF प्लस अनदर फैक्टर्स का क्वेश्चंस, राइट? एंड वी विल बी टेकिंग मोर एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स इन दैट सेशन. सो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमारा नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा, राइट? प्रीवियस सारे सेशंस आप देख सकते हो, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है. देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ 500 मस्ट टू क्वांट. यू गाइस कैन रेफर टू दैट प्लेलिस्ट, राइट? थैंक यू गाइस. सी दैट. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक्स अ लॉट.